बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह महज मुखलिस मुस्लिमीन अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हमने मुतारफ़ करवानी है किताब। ये किताब है रिक्लेम योर हार्ट। तो ये मोहतरमा जो हैं इसकी राइटर मिस्री नय्यार अमेरिकन ख़ातून हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुवाहिदा हैं, मुस्लिमा हैं। आज के इस गए गुज़रे दौर में जब मर्द भी इस्लाम, तौहीद, सुन्नत से बेगाने होते जा रहे हैं, तो एक औरत जो है, एक ख़ातून जो है, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ किस्म की ख़ातून, उसने तौहीद और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बिल्लाह के हवाले से काफ़ी कुछ लिखा भी है, स्पीचेस भी करती हैं। तो लिबरल और आजकल की फैशन ज़दा और मगरिब ज़दा आसमा जहांगीर टाइप औरतें जो हैं, उनके लिए ये ज़हर कातिल ख़ातून है। तो इनकी इस किताब की ट्रांसलेशन, उर्दू में ट्रांसलेशन, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो सोचा कि आज आपको इसका एक चैप्टर तो नहीं कहना चाहिए, इन्होंने एक छोटी सी बुक है, इसके इन्होंने कुछ सेक्शंस बनाए हैं। उन सेक्शंस के अंदर जो है सब टाइटल होते हैं। तो इस लिहाज से 2-2.5 पेजेस का एक टाइटल आपके सामने आपकी दीदाए बसीरत की नज़र कर रहे हैं कि फॉल इन लव विद द रियल थिंग। फॉल इन लव विद द रियल थिंग। मोहब्बत जो है वो एक कहा जाता है, इसके बारे में काफ़ी शायरों ने भी, शुरा ने भी बड़े बुलंद बांग दावे किए, और हर शख्स जो है आपको कहता फिरेगा कि मोहब्बत तो एक आफाकी जज्बा है। मोहब्बत का ज़िक्र कुरान मुक़द्दस में भी है। तो हमने भी इसके कई टॉपिक्स जो हैं उनमें से पहले नंबर पे यही चुना है। आप इसकी सिंपलिसिटी देखेंगे और इसकी गहराई देखेंगे। ख़ातून जो है एक सादा अंदाज में बड़े ज़बरदस्त तरीके से डीप रियलिटी तक आपको पहुंचाती है और ख़ुद भी पहुंचती है। तो हम अब इसको रीड कर रहे हैं, तो तवज्जो से सुनिएगा, और इस पे फिर कुछ हमें आपके कमेंट्स भी दरकार हैं कि ये कैसा सिलसिला है। इट इज़ नेवर ईजी टू लेट गो। निजात पाना या छुटकारा पाना आसान नहीं है। और इज़ इट, क्या आसान है? Most of us would agree that there are few things harder than letting go of what we love. जिन चीज़ों से मोहब्बत की जाती है उन्हें छोड़ना आसान नहीं होता। And yet sometimes that is exactly what we have to do. और बाज़ औक़ात हमें यही कुछ करना पड़ता है, यानी छोड़ना पड़ता है। Sometimes we love things that we cannot have. Sometimes we want things that are not good for us. आसान तुहिब्बु शैअन फहुव शर्रुल लकुम. And sometimes we love what Allah does not love. होए होए, अल्लाह जिन चीज़ों से मोहब्बत नहीं करता, हम उनकी मोहब्बत में पड़ जाते हैं। या अल्लाह नहीं चाहता कि हम इससे मोहब्बत करें। हम जो मोहब्बत कर रहे हैं, ये मोहब्बत हमारे लायक नहीं है। To let go of these things is hard. Giving up something the heart adores is one of the hardest battles we ever have to fight. But what if it did not have to be such a battle? What if it did not have to be so hard? Could there ever be an easy way to let go of an attachment? किसी वाबस्तगी को छोड़ देना, उसका कोई आसान तरीका भी है?
Yes, there is. हाँ है. Find something better. अदना से आला की तरफ इर्तका करेंगे, तरक्की करेंगे जब आप, तो फिर छोटी मोटी लोअर किस्म की अदना घटिया चीज़ें जो है वो आप छोड़ते जाएंगे, जैसा कि हमने छोड़ी हैं. They say you do not get over someone until you find someone or something better. As humans, we do not deal well with emptiness. जब हमारे अंदर खला आ जाता है, हमारी ज़िंदगियों में बंदों का खला आ जाता है, रूहानी जज्बात का खला आ जाता है, ज़हनी अफकार का खला आ जाता है, तो इस खला को पुर करना, खला तो हमेशा पुर होते रहते हैं, लेकिन अब ये हम पे मुनहसर है कि हम किस चीज़ से इसको पुर करते हैं. Any empty space must be filled immediately. The pain of emptiness is too strong. खोखलेपन का, खालीपन का जो एक कर्ब होता है वो बहुत सख्त होता है. It compels the victims to fill the place. A single moment with an empty spot causes excruciating pain, नाकाबिल बर्दाश्त दर्द. That is why we run from destruction to destruction and from attachment to attachment. In the quest to free the heart, we speak a lot about breaking our false dependencies. But then there is always the question of how. Once a false attachment has been developed, how do we break free? Often it feels too hard. We get addicted to things. हम चीज़ों के आदी हो जाते हैं, नशा सा लग जाता है, and cannot seem to let them go, even when they hurt us, even when they damage our lives and our bond with God, even when they are so unhealthy for us. We just cannot let them go. We are too dependent on them. We love them too much and in the wrong way. They fill something inside of us that we think we need, that we think we cannot live without. And so, even when we struggle to give them up, we often abandon the struggle because it is too hard. हम चीज़ों को छोड़ने की जो सही होती है, कोशिश होती है, वो कोशिश छोड़ देते हैं क्योंकि चीज़ें हमसे नहीं छूट रही होती. मिसाल के तौर पर स्मोकिंग है, कोई जिगरी दोस्त है, कोई मोहब्बत है, कोई दौलत है, कोई जायदाद है, कोई लालच है, कोई हिर्स है, कहीं दिल अटकी और उसमें हम बिला सोचे समझे पड़ जाते हैं. उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना चाहते भी हों तो उन्हें छोड़ना जो है अज़ाब जहाँ गुसल हो जाता है. Why does that happen? ऐसा क्यों होता है? Why do we have so much trouble sacrificing what we love for what God loves? Why cannot we just let go of things? I think we struggle so much with letting go of what we love because we have not found something we love more to replace it. चीज़ों को छोड़ना जो है इसलिए मुश्किल हो रहा होता है, अशख़ास को, चीज़ों को, मोहब्बतों को, कि उससे आला और अरफा बेहतर चीज़ें, लोग और मोहब्बतें हमें नहीं मिल रही होती. When a child falls in love with a toy car, he becomes consumed with that love. खोली तो जाता है वो बेचारा. अगर बच्चा जो है वो किसी खिलौना कार की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, वो हर वक्त उसी के बारे में सोचता है. But what if he cannot have the car? What if he has to walk by the store every day and see the toy he cannot have? Every time he walks by, he would feel pain. And he may even struggle not to steal it. Yet, what if the child looks past the store window and sees a real car? What if he sees the real Ferrari? Would he still struggle with his desire for the toy? Would he still have to fight the urge to steal it?
Or would he be able to walk right past the toy, the disparity in greatness, annihilating the struggle? बच्चा जो है स्टोर पे रोज़ाना देखता है खिलौना गाड़ी को, पैसे नहीं है, गुजर जाता है स्टोर से। चुराने की जो एक ख्वाहिश है, एक अंदर जो नफसानी जज्बा है, उस पर भी बड़ी मुश्किल से काबू पाता है। लेकिन अगर क्या उसके सामने एक फरारी आ जाए खूबसूरत सी हकीकी कार, तो क्या अब भी वो उस खिलौने में उलझेगा? We want love, we want money, we want status, we want this life. And like that child, we too become consumed with these loves. So when we cannot have those things, we are the child in a store, struggling not to steal them. We are struggling not to commit harm for the sake of what we love. We are struggling to let go of the harm, relationship, business dealings, actions, dress. We are struggling to let go of the love of this life. We are the stumbling servant struggling to let go of the toy because it is all we see. This whole life and everything in it is like that toy car. We cannot let go of it because we have not found something greater. We do not see the real thing, the real version, the real model. Allah says, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعْبٌ. What is the life of this world but amusement and play? وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. But verily, the home in the hereafter, that is life indeed. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. If they but knew. Quran, chapter number 29, verse number 64. When describing this life, Allah uses the Arabic word for life, al-hayat. But when describing the next life, Allah here uses the highly exaggerated term for life, al-hawan. The next life is the real life, the real version. And then Allah ends the ayah by saying, if they but knew. If we could see the real thing, we could get over our deep love for the lesser, fake model. In another ayah, God says, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. But you prefer the worldly life, while the hereafter is better and more enduring. Quran, chapter number 86, verses number 16 and 17. The real version is better in quality and better in quantity. No matter how great what we love in this life is, it will always have some deficiency in both quality, yani in perfection, and quantity, yani temporary. This is not to say that we cannot have or even love things of this life. As believers, we are told to ask for good in this life and the next. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. But it is like the toy car and the real car. While we could have or even enjoy the toy car, we realize the difference. We understand fully that there is a lesser model, dunya, coming from the root word danya, meaning lower, and there is the real model, hereafter. But how does that realization help us in this life? It helps because it makes the struggle to follow the halal and refrain from the haram easier. The more we can see the real thing, the easier it becomes to give up the unreal when necessary. That does not mean we have to give up the unreal completely or all the time. Rather, it makes our relationship with the lesser model dunya one in which, if and when we are asked to give something up for the sake of what is real, it is no longer difficult. If we are asked to refrain from a prohibition that we want, it becomes easier. If we are asked to be firm
in a commandment that we do not want, it becomes easier. We become the mature child who likes to have the toy, but if ever asked to choose between the toy and the real thing, sees are no-brainer. For example, many of the Prophet's sallallahu alaihi wasallam companions had wealth, but when the time came, they could easily give half or all of it for Allah's sake. The focus also transforms. This focus also transforms what we petition for help or approval. If we are in desperate need of something, we will appeal to the servant only when we do not see or know the king. یہ ہمارے یہاں کے جو مشرق ہیں کہ وہ ڈی سی تک پہنچنے کے لیے چپڑاسی کو فالو کرنا پڑتا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے. But if we are on our way to meet the king and we run into his servant, we may greet the servant, be kind to the servant, even love the servant. Yet we will not waste time trying to impress the servant when there is a king to impress. We will never waste effort appealing to the servant for our need while the king is the one in control. Even if the king had given some authority to the servant, we would know very well that the power to give and take rests ultimately with the king and the king alone. This knowledge comes only from knowing and seeing the king, and this knowledge completely transforms how we interact with the servant. Seeing the real thing transforms the way we love. Ibn Taymiyyah rahmahullah discussed this concept when he said, if your heart is enslaved by someone who is forbidden for him, one of the main causes for this miserable situation is running away from Allah. For once the heart has tasted worship of Allah and sincerity towards Him, nothing will be sweeter to it than that. Nothing will be more delightful or more precious. No one leaves his beloved except for another one he loves more, or for fear of something else. The heart will give us corrupt love in favor of true love, or for fear of harm. One of our greatest problems as an ummah is, as the Prophet ﷺ told us in a hadith, wahan, love of dunya and hatred of death. We have fallen in love with dunya, and anytime you are in love, it becomes next to impossible to get over that love or separate from it until you are able to fall in love with something greater. It is next to impossible to dislodge this destructive love of dunya from our hearts until we find something greater to replace it. Having found a greater love, it becomes easy to get over another one. When the love of God, His messenger, and the whom with Him is really seen, it empowers and dominates any other love in the heart. The more that love is seen, the more dominant it becomes, and thereby the easier it will be to really actualize the statement of Ibrahim alayhi salam, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alameen. Say indeed, my prayer, my service of sacrifice, my living and my dying are for Allah, Lord of the worlds. Chapter number 6, verse number 162. So in letting go, the answer lies in love. Fall in love. Fall in love with something greater. Fall in love with the real thing. See the mansion. Only then will we stop playing in doll house. خاتون ہے ڈال ہاؤس پہ انہوں نے اس اپنے رائٹنگ پیس کا اختتام کیا، تو دل چاہ رہا تھا کہ ساتھ ساتھ کچھ ٹرانسلیشن ہو، لیکن مجھے کچھ مزہ نہیں آ رہا تھا، تو ٹرانسلیشن اصل جو ایسنس ہوتا ہے فکرے کا اس کو بھی چھین لیتی ہے. کوشش کی ہے کہ کچھ اچھے طریقے سے اسے ریڈ کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے.
تو یہ خاتون جو ہے یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے، یاسمین مجاہد، مصری خاتون، اور بڑی قرآن کی عالمہ اور معاہدہ، توحید کی پرچارک، توحید کی مبلغ. اس کے لیے بھی دعا فرمائیں، ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.